तो चलिए रिकैप करते हैं पार्ट एक का। हमने देखा कि आप चैट जीपीटी और मेटा एआई का यूज़ करके बिल्कुल फ्री में प्रोफेशनल हॉलीवुड स्टाइल एनिमेशंस बना सकते हो। मैंने आपको बताया कैसे चैट जीपीटी से परफेक्ट प्रॉम्प्ट्स लिखे जाते हैं और मेटा एआई उन्हें स्टनिंग एनिमेशंस में बदलता है। आपने ये भी समझा कि एनिमेशन बनाना अब मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि ये दोनों टूल्स प्रोसेस को सिंपल और क्रिएटिव बना देते हैं। बस चैट जीपीटी में अपना डिजायर्ड प्रॉम्प्ट लिखिए। याद रखिए, जितना अच्छा प्रॉम्प्ट लिखेंगे उतनी बेहतरीन इमेज क्वालिटी मिलेगी। आप प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट्स इमेज जनरेशन वेबसाइट से भी ले सकते हो। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे मेटा एआई के लिए परफेक्ट प्रॉम्प्ट लिखा जाता है और फिर उसी प्रॉम्प्ट का यूज करके एक सिनेमैटिक इमेज जनरेट करेंगे। हम ये भी समझेंगे कैसे एक ऑलरेडी जनरेटेड इमेज से नई आइडियाज लेकर रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपनी यूनिक इमेज बनाई जा सकती है। लेट्स recap part 1. We learned that you can create professional Hollywood style animations using ChatGPT and Meta AI completely free. I showed you how ChatGPT can write perfect prompts and how Meta AI transforms them into stunning animations. You also discovered that animation isn't hard anymore because these tools make the process simple and creative. All you need to do is type your desired prompt in ChatGPT. Remember, the better your prompt, the higher your image quality. You can even explore professional prompts from image generation websites. In this video, we'll see how to create a perfect prompt for Meta AI and then use that prompt to generate a cinematic image. We'll also explore how to generate a new image from an existing one by reverse engineering and transforming it into your own unique creation. तो चलिए अब हम देखते हैं प्रॉम्प्ट के ज़रिए हम किस तरह इमेज बनाते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैंने 3 प्रॉम्प्ट चैट जीटीपी से बिफोर रिकॉर्डिंग मैंने जो लिखवाए थे और मैं ये प्रॉम्प्ट आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले करूँगा। उस प्रॉम्प्ट का आप इस्तेमाल करके आप इमेज बना सकते हैं और उसके बाद अगर आपको प्रॉम्प्ट नहीं आता है और आपको आइडिया समझ में नहीं आ रही है, आइडिया है लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं प्रॉम्प्ट में किस तरह जो है मैं प्रॉम्प्ट लिखूं, तो आप एक दूसरी चीज़ भी ये कर सकते हैं कि आप अगर किसी भी इमेज सॉफ्टवेयर पे चले गए, वेबसाइट या आइडियोग्राम या रन अवे एमएल या जो भी वेबसाइट में आपको जो भी इमेज पसंद आती है, आप उस इमेज से भी आप जो है चैट जीटीपी से प्रॉम्प्ट लिखवा सकते हो और तकरीबन प्लस माइनस उसी टाइप का आप जो है इमेज जनरेट कर सकते हो। तो उसको कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग और मैं वो चीज़ भी आपको आज के डेमो में बताऊंगा। So let's move on to our magic section, which is the backbone of today's video, where we'll be generating a prompt to create a stunning image and then using the same platform, which is ChatGPT, to write a prompt to convert that image that we have generated into a stunning animation. Which is simple, isn't it? We're just going to write the prompt. So I'll be writing 3 prompts of a different type of images that you can generate from Meta AI. Okay, that's the part 1. And the part 2 also, I'm going to be showcasing you how to do a reverse engineering. लेकिन ये डेमो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई इमेज फर्ज करें एडियोग्राम पे पसंद आई है, तो आप उस इमेज को डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं। आपको कॉपीराइट प्रॉब्लम आ सकता है। इसीलिए द बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप उस इमेज को डाउनलोड करें, जो पब्लिक फोल्डर में होता है, पब्लिक सेक्शन में होता है, आप उसे डाउनलोड करें और आप जो है किसी भी चैट जीटीपी के तरह के सॉफ्टवेयर में उसको डालें और उससे
रिवर्स इंजीनियरिंग जो मैंने ऊपर समझाया था उसके ज़रिए फिर से एक प्रॉम्प्ट अपने हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे आपको इंग्लिश में टेक्स्ट डालना है या आपका ब्रांड डालना है या आपके आपके हिसाब से उसको जो है मॉडिफाई करना है, तो आप उस इमेज का बैच जो है एक सैंपल लेके आप चैट जीटीपी को कह सकते हो कि मुझे इसी टाइप का इमेज बनाना है और ये जो है मेरा प्रॉम्प्ट है। Which means you went on any website and you found a very nice image and you want to use it, but unfortunately you cannot use that image directly because the creator might file a copyright on you. Especially when it comes for YouTube, you need to be very careful. Don't use the image directly. In fact, you can use that image and write a prompt, which again I'm going to show you in this section, is how to write a prompt based on the image that you like. So let's say, for example, I'll be using ideogram. I'll be scrolling down through the tons of already created images. I'm going to be using one of the image from there, and then I'll write a prompt which is known as a reverse engineering. So it's an image generated by some creator, and I'm going to use that image because I like the background. I might like the object. I might like so many things. I mean, it depend on what type of image I want to create. So I will use that, and I will write a prompt uh, so that it can be modified as per my need, as per my desire, and what I need to add in, so that I don't get a copyright strike or anyone just coming to me, hey, this is my image. I don't want that to happen. So for that, we'll be doing a reverse engineering. Uh, तो जैसे मैंने बताया, यहाँ मैं इस पर्टिकुलर रिवर्स इंजीनियरिंग में मैं वीडियोग्राम के इमेज को आपके सामने मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ और उसका यूज़ करूँगा और उससे मैं जो है फिर जाके चैट जीटीपी पे उसको प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट करूँगा। अब आपने देखा कैसे चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट से मेटा एआई में सिनेमैटिक इमेज जनरेट होती है। अगले पार्ट में हम इसी इमेज को एनिमेट करेंगे और बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करेंगे, जिससे फाइनल वीडियो और भी इंगेजिंग बन जाए। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला पार्ट मिस ना हो। You just seen how a ChatGPT generated prompt can create a cinematic image in Meta AI.
In the next part, we'll animate this image and add background music to make it even more engaging. Subscribe now so you don't miss that final step.